Hope everyone is able to see the slide. Anyone confirm? Yes, sir. You can continue. Yes. So I want to know that you have joined a course, 3 months course in regulatory affairs. So what you know about regulatory affairs? So can anyone tell me what is the meaning of a regulatory affairs? What do you understand from the regulatory affairs? What type of work is done? Can you answer this question? Sir, Anyone? Try to make as much as the session interactive, because everyone idea should be welcomed in this session, and all the doubts in your mind related to this domain should be clear, and it help others also to clear their doubts. So be interactive during the session. If any questions are there, you feel that shy, or you feel, you can type in the chat box also, no problem. Yes, anyone? Yeah. Good afternoon, sir. Yes, good afternoon. Yeah, I'm Nutan Bhutkar. Yeah. Am I audible? Yes, you are audible. Yeah. So this regulatory affairs, it is the department in a pharmaceutical company which looks after the practices that are followed in the production of API, and not only API but the final medicine that is made, the final drug that is prepared, the overall practice that the company is following. Is it according to the rules that is prescribed by whichever destination the product is going to be exported, or it is going to reach? So those companies have or those countries have set some rules for preparing that particular medicine. So according to those portfolio, those rules have followed or not, everything is looked after by this department. Yeah. Okay. Somewhat you are saying related to the GMP conditions are followed or not, Okay. according to the country in which the product is expected to be marketed, right? Yeah. Yes. This is one role of a regulatory person, one role. But the major roles are that to get the company is accessible for marketing its manufactured products in a particular country, and based on the company's willingness to keep that product alive in the market. अब एक है कि प्रोडक्ट का अप्रूवल करा के देना पर्टिकुलर कंट्री में जिधर कंपनी बेचना चाहती है वो प्रोडक्ट को, और बाय द टाइम पीरियड जब भी उसका वैलिडिटी खत्म होता है या उसका कुछ भी और कुछ अगर आपको वेरिएशंस करना है, रिन्यूअल्स करना है, to make that product live in the market. So all that related to registrations, related to any inspections, all that is taken care by the regulatory department. Can anyone try? Anyone other any idea related to regulatory affairs? You can share.
Amol, what do you know about regulatory affairs? So we will see the definition. Regulatory affairs, that is DRA, is a mediator between pharmaceutical company and drug regulatory authority. So this is a simple definition. So DRA department serves as a mediator between company and government authority. So whatever the data generated respected to the product, that data is compiled in a format of a dossier or in a format of a variation or in a format of a renewal dossier, and that data is to the government authority for the approval of the product or for the any other activity. And after that, assessment of the dossier or the documents by the regulatory authority or government authority, whatever the approval letters are given by the authority, that are given to the DRA department, and then DRA department circulates that approval copies in the company. जो रिस्पेक्टिव स्टेक होल्डर्स है उनको वो सर्कुलेट किए जाते हैं. तो मतलब ये मिडवे उनका एक ऐसा काम है कि प्रोडक्ट का डेटा जो है उसका सर्कुलेशन करना गवर्नमेंट अथॉरिटी को भी, और गवर्नमेंट अथॉरिटी से जो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं वो बाद में फिर कंपनी में सर्कुलेट करना. सो रेगुलेटरी अफेयर्स मेनली सर्व्स एज अ मीडिएटर बिटवीन द कंपनी एंड द अथॉरिटी. So first we will see why DRA is required. So DRA is required because in the past some of the major incidents have happened which are life threatening. So I have enlisted here some of the incidents. So first is in 1937 over 100 people in the USA died of diethylene glycol poisoning following the use of a sulfanilamide elixir, which used the chemical as a solvent without any safety testing. Means the diethylene glycol is used as such without any safety testing in the sulfanilamide elixir. And with the use of this elixir, more than 100 people died in the USA. This is one of the major incidents. And next major incident, that thalidomide tragedy. All of us in our pharmacology books also we have seen a picture of a baby having a which has caused the thalidomide tragedy, and it has a deformities and phocomelia effect. मतलब उसके जो limbs, hands जो है वो पूरी तरह से develop नहीं हुए हैं. So that is a side effect, or we can consider as an adverse effect of a thalidomide. अगर ये थैलिडोमाइड पहले से ही उसका अगर सेफ्टी टेस्टिंग होता और ये पहले से ही अगर पता होता कि ये प्रेग्नेंट लेडीज में को नहीं देना है, नहीं प्रिस्क्राइब करना है, सो दैट ट्रेजेडी मे बी प्रिवेंटेड. बट एट दैट टाइम दिस वाज नॉट इन एग्जिस्टेंस, दैट DRA नॉट इन एग्जिस्टेंस. सो एज सच ये प्रिस्क्राइब किया गया प्रेग्नेंट लेडीज को, और फिर दैट more than 10,000 babies born with a deformed hands and legs. So that is one of the major incident. So due to these incidents, the DRA, that is a regulation over the drugs, has came into existence, or it is required to be done, that regulations on the drugs are necessary. Next, that is why drugs should be regulated. First is
drugs are not ordinary consumer products. मतलब ड्रग्स यूज करने से पहले एक तो हमको डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन चाहिए. ओटीसी प्रोडक्ट से इसके लिए भी हमको पहले तो कुछ तो हमको साइंस एंड सिम्टम्स चाहिए, तभी हम वो मेडिसिन लेंगे. नहीं तो ऐसे तो कोई मेडिसिन नहीं लेता है जैसे हम बाकी टॉफीज वगैरह खाते हैं वैसे. सो दीज आर नॉट द ऑर्डिनरी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स. सो देयर शुड बी अ साइन एंड सिम्टम ऑफ अ डिसीज, देन ओनली वी विल कंज्यूम दैट drug. Then many consumers don't know how to use, when to use, and why to use drugs. So the best example, or one of the best example I can give here, that if a medicine is a chewable, then that medicine should be kept in a mouth, then only it will get absorbed and the effect will be seen. अगर वो मेडिसिन अगर पेशेंट स्वेलो कर रहा है तो फिर वो डिजायर्ड इफेक्ट नहीं मिलेगा और उसको कुछ भी फायदा नहीं होगा वो मेडिसिन लेके. सिमिलर एग्जांपल है, एंट्रिक कोटेड अगर टैबलेट है तो उसको ब्रेक करके लेने में कुछ भी फायदा नहीं है. ऑल ऑफ मतलब अपने जो फार्मेसी बैकग्राउंड से है या और कोई भी है, पता होगा कि एंट्रिक कोटेड टैबलेट आर डिजाइन्ड टू release their drug in the intestine. That's why they are entry coated. अगर उसको ब्रेक करके आप, अगर मुझे पूरी टैबलेट नहीं लेनी है, मुझे हाफ टैबलेट लेनी है, तो अगर उसको आप हाफ करोगे तो दैट ड्रग विल डिग्रेड इन द स्टमक इटसेल्फ. बराबर, तो उसका कुछ इफेक्ट ही नहीं होगा. सो दिस ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन शुड बी supplied to the consumers because they are not aware of this information. Again, medical professionals जो डॉक्टर्स रहते हैं उनको भी एडिक्वेट नॉलेज नहीं रहता है ड्रग्स के बारे में. अभी इसका एक एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा इधर कि कुछ मेडिसिन में सोडियम यूज किया रहता है, मतलब क्रॉस कॉर्मेलोस सोडियम रहता है या सोडियम क्लोराइड भी रहता है कभी कभी. तो ये जो सोडियम की जो मात्रा रहती है उसमें अमाउंट रहती है, वो सोडियम का अमाउंट भी हर एक जो अपने कार्टन में कभी कभी एक पेशेंट इंफॉर्मेशन लिफलेट करके रहता है, आपने देखा होगा एक लिफलेट रहता है उसमें ये सब इंफॉर्मेशन रहती है. अगर सपोज एक हाइपरटेंसिव पेशेंट है, हाइपरटेंशन का एक पेशेंट है, उसको अगर आप सोडियम कंटेनिंग मेडिसिन अगर दे रहे हो तो उसका हाइपरटेंशन और भी ज्यादा हायर शूट अप हो सकता है. तो उसको ये अल्टरनेटिव मेडिसिन देनी चाहिए जिसमें सोडियम, एक तो उसका सोडियम रहे ही ना या अमाउंट जो है उसका कम रहे. सो दिस ऑल इंफॉर्मेशन विल बी इंक्लूडेड इन द पिल. एंड ये पिल जो है ये रेगुलेटरी अफेयर्स का ही काम रहता है कि उस पे ये इंफॉर्मेशन इंक्लूड करना. So when the drugs are under the regulations, so all this information comes under the pill of the product. अभी डॉक्टर्स को भी ये इंफॉर्मेशन पता नहीं रहती है कि बाबा कौन सा एक्सिपिएंट यूज किया है ये प्रोडक्ट में, तो इसके लिए ये इंफॉर्मेशन ये पेशेंट इंफॉर्मेशन लिफलेट में डाला जाता है so that the healthcare professional will come to know that this medicine is not suitable for a hypertensive patient. We should go for an alternative. Then next is the use of ineffective, poor quality, harmful medicines can result in therapeutic failure, worsening of disease, resistance to medicines, and sometimes death. So to avoid this, to avoid the occurrence of ineffective, poor quality, and harmful medicines which are resulting in a therapeutic failure or worsening of disease or resistance to medicines or sometimes death, the drugs should be regulated. So to avoid or to overcome all these obstacles, the drugs should be regulated. Have you understood these criteria due to which the drugs should be regulated? Any doubt in this slide up to this? No.
can ask the questions in between also. There is no issue. Here we go to the next slide. So to overcome all these hurdles, all the countries have developed the national regulatory authorities. So thus to regulate the drugs and to protect the safety of citizens, countries developed the national regulatory authorities. So all these national regulatory authorities have some criteria. That is, all the NRAs should have a clear mission statement. Mission statement मतलब what they are willing to do to protect the safety of the citizens. एक तो उनको क्वालिटी कंट्रोल करना है, सेफ्टी, इफिकेसी, उसके साथ जो प्राइस रहेगी मेडिसिन की वो भी उनको कंट्रोल करना है. So all this should be included in a mission statement of a NRA. So they are post or they should have a mission that we are making available the medicines to our citizens in a most cost-effective manner, and at the same time the medicines are having a highest grade of quality and they are safe to the citizens and they are highly effective. So this should be a part of a mission of a NRA. Then adequate medicines regulations. So the NRA should have a regulations in place. Take the quality, safety and efficacy. Then clearly defined NRA roles and responsibilities. So NRA should allocate defined roles to each department. मतलब quality department सिर्फ quality check करेगा, safety वाला जो प्री क्लिनिकल एक्सपर्ट्स रहेंगे वो सेफ्टी चेक करेंगे, एफिकेसी मतलब जो बायो इक्विवेलेंस स्टडी जो परफॉर्म किए उसके लिए क्लिनिकल एक्सपर्ट टीम अलग रहेगी, उनका रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज क्या रहेगी, ये अलग से सब डिफाइंड होना चाहिए एनआरए में, नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी में, सो दैट हर एक का रिस्पांसिबिलिटी पता रहेगा सबको. तो उसके हिसाब से डोजियर जो रहेगा या प्रोडक्ट का जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे विथ ईच पार्ट ऑफ द डोजियर, that will be assessed separately and they will come to an conclusion in a most मतलब time efficient way also. नहीं तो एक ही डिपार्टमेंट पे पूरा अगर डोजियर मतलब उसको क्वालिटी भी चेक करना है, उसको सेफ्टी भी चेक करना है, उसको एफिकेसी भी चेक करना है, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स भी चेक करना है, so that will take a time and the availability of medicines to the public will also get delayed. So that's why each and every department should have a defined roles and responsibilities. Then next is international and internal collaboration with other NRAs. अभी इसमें यूरोप कॉन्टिनेंट है उसका एक एग्जांपल है अच्छा, कि यूरोप में जब भी आप एक डोजियर कोई भी सबमिट करते हो, यूरोप में मतलब यूरोप की से कोई भी मेंबर स्टेट में, टोटल देयर आर 30 मेंबर स्टेट्स इन द यूरोप. अगर सपोज आप जर्मनी में अगर डोजियर सबमिट करते हो तो जर्मनी में अगर अप्रूव होता है प्रोडक्ट बराबर, तो आप उस डोजियर, उस अप्रूव्ड डोजियर का रेफरेंस लेके आप दूसरे मेंबर स्टेट में मतलब आयरलैंड में डोजियर अप्रूव करा के, प्रोडक्ट अप्रूव करा के ले सकते हो. So this is because they have an internal collaboration with the other NRAs. So Ireland का जो NRA है that has a internal collaboration with the Germany NRA. So that's why it is possible. So each NRA should have an internal and international collaboration with each other so that the product approval will take on a faster practices. Sir, I think NRA means National Regulatory Affairs. National Regulatory Authority. Okay, sir. I have given the long form here. Okay, so next is effective internal quality system contribute to the success of a regulatory authority. So NRA should have a effective
quality system so that it will lead to a successful evaluation of a quality dossier or a successful, so they can give to their public a quality product. So these are the roles, or these are the criteria of a well established or having a well quality system NRA. So each NRA should have these criteria to get a quality product passed through their review and make available to their citizens. Any doubt in this slide? No, sir. Okay. Next, Yeah. we will see the names of some of the regulatory authorities here. India has a regulatory authority, that is CDSU, that is Central Drug Standard and Control Organization. USA has a US FDA, UK has a MHRA, that is Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency. Australia has a TGA, and South Africa has a SAFRA. Europe has its EMEA. Brazil and Visa, Canada, Health Canada, New Zealand, MedSafe, and Japan, PMDA and MHLW. Sir, I have one question, sir. Yes. सर क्या आप डोजियर बनाना सिखाएंगे सर, इस जो मतलब कोर्स वगैरह कराएंगे सर आप, मतलब इसमें डोजियर वगैरह बनाना सिखाएंगे आप सर? Dossier मतलब I will explain you in detail the contents of the dossier, which all the information included in each section of the dossier. उसमें हम इधर देखेंगे CTD डोजियर के कंटेंट्स क्या होते हैं, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन इंक्लूड होता है हर एक सेक्शन में. उसके बाद ACTD डोजियर जो होता है उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होता है, बाकी ECTD डोजियर क्या होता है उसमें क्या इंफॉर्मेशन जाता है. ये सब हम जैसे जैसे क्लास प्रोसीड होते जाएगा ये सबके आगे मतलब लास्ट वाले सेशंस रहेंगे, क्योंकि पहले हमको ये पता करना होगा कि एक्चुअल में जो गाइडलाइंस है जिसके बेसिस पे डोजियर बनाया जाता है, गाइडलाइंस पहले पता करना जरूरी है. उसके बाद हम डोजियर के कंटेंट्स अच्छी तरह से आपको समझ में आएंगे. तो ये पहले हम देखेंगे, उसके बाद हम डोजियर के कंटेंट्स डिटेल में बनाना है ना सर. ऐसा है ना, देखो सर हमने जो है कुछ मोस्ट ऑफ द चीजें सर हमने लास्ट सेमेस्टर में बी फॉर्म के इसमें पढ़ी हुई हैं सर. जैसे हमारे पास सब्जेक्ट था ना सर ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स सर, तो उसमें कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन इंट्रोडक्शन मान लीजिए, चाहे थोड़ा थोड़ा उसको हमने कुछ पता है. CTD सर हो गया, ECTD हो गया सर. ये तो मतलब ये तो पता ही है इतना, मतलब कंटेंट वगैरह चलो वो कर लेंगे, मतलब उसमें बनाना सिखाएंगे आप मतलब एक तरह से सर. क्या आप कंपनी वो सिलेबस शेयर कर पाएंगे जो आपने मतलब अभी तक सीखा है वो? तो मेरे को भी आइडिया रहेगी कि आपने क्या मतलब अब तक कितना सीखा है. हाँ जी सर. So you can share that syllabus in our group. So okay, sir. I have an idea that what should be included. Okay sir. Yes, please share that information. Okay, so अभी as such अगर yes, anyone has doubt? No sir, continue sir. Okay, regulatory affairs. ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज के जो नाम है, जब भी आप इंटरव्यू के लिए भी जाओगे तो आपको ये सवाल पूछा जाएगा कि टेल मी द नेम ऑफ अ रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ USA और UK, साउथ अफ्रीका, यूरोप. सो एटलीस्ट यू शुड रिमेम्बर द नेम ऑफ 5, और जितना आप याद रख सकते हो उतना अगर अच्छा है, क्योंकि कौन से कंट्री का नाम लेंगे वो और बोलेंगे कि इसका नाम बताओ रेगुलेटरी अथॉरिटी का. सो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर दैट क्वेश्चन. मेन मोस्टली पूछते हैं ये जो है वो जिधर इनलिस्ट किए है. Next is roles of a DRA professional: to assist the R&D department in drug development process, to acquire in-depth knowledge of regulatory guidelines,
mute your mic. To coordinate and provide required information to cross-functional teams for generation of required data for filing purpose. Then to file and obtain the approval of medicine from the regulatory authority and to maintain product life cycle. So पहला रोल है to assist the R&D department in drug development process. अभी ड्यूरिंग द ड्रग सपोज अभी कैसा है कि कंपनी को मार्केट करना है प्रोडक्ट यूएस में, ओके एक जेनरिक ड्रग उसको डेवलप करना है, उधर मार्केटिंग करना है, तो रेगुलेटरी डिपार्टमेंट का क्या काम रहता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट? एक तो रेफरेंस प्रोडक्ट क्या है वो उसका मतलब वो ढूंढ के देना, मतलब ऑरेंज बुक रहता है एक जिसमें रेफरेंस प्रोडक्ट्स के नाम रहते हैं, इनोवेटर प्रोडक्ट्स के, उसमें से रेफरेंस प्रोडक्ट रेगुलेटरी पर्सन को they have to find it and they have to give to the F&D department so that they can start their development. उसके बाद as the development is ongoing, अगर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर रखती है कि बाबा कौन सा एक्सिपिएंट यूज करना है, कौन सा नहीं यूज करना है, कौन सा एक्सिपिएंट बैन है यूएस मार्केट में, ये सब इंफॉर्मेशन भी अगर रेगुलेटरी की हेल्प लगती है तो उधर regulatory should assist the R&D department during that phase of the development. Then कुछ अगर during the time if any hurdles are coming, then for that to overcome that hurdles the regulatory person should consult with the authority as well. So that assistance is provided by the regulatory person to the R&D department during the development of the product. So this is one type of a role of a DRA professional. The next role is to acquire in-depth knowledge of regulatory guidelines. So this is the main role because अगर regulatory guidelines का knowledge नहीं है तो that person cannot work efficiently in the department. So this is very much important. The next is to coordinate and provide required information to cross-functional teams for generation of required data for filing purpose. So after the development, if any information is required to cross-functional teams मतलब क्या है कि स्टेबिलिटी की टीम रहती है या क्यूसी की टीम है या और बायोइक्विवेलेंस भी स्टडी करने वाली क्लिनिकल की टीम है, उनको कुछ अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो दैट इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड बाय द रेगुलेटरी पर्सन. So that is one of the role of a DRA professional. The next is after completion of all the data, all the documentation part, that all the data is compiled by the regulatory person and that is compiled in a format given by the ICH, that is called as a dossier, and that dossier will be filed to the regulatory authority. And after evaluation of that dossier, the authority raises some queries related to the documents, and after successful completion of the query responses, authority grants the approval of a product. So this approval मतलब ये एक मेन रोल है कि कंपनी को अप्रूवल लाके देना प्रोडक्ट का. उसके बाद प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मतलब इसमें सपोज प्रोडक्ट अप्रूव हो गया, प्रोडक्ट जब भी अप्रूव होता है तो उसको 5 साल का वैलिडिटी मिलता है, तो वो 5 साल में आप प्रोडक्ट मार्केट कर सकते. लेकिन 5 साल उसका खत्म होने को आए हैं तो देन मार्केटिंग टीम सजेस्ट दैट this product has a potential for selling in the market, so the life of that product will be continued. मतलब उसका renewal dossier फिर file करते हैं so that the validity of that product will again increased by 5 years. Sir, I have a question, Yes. sir. Yes. Can we say this thing? The main objective of DRA is to get the approval of product in other countries.
वन ऑफ दी। ये तो मेन काम ही है रेगुलेटरी पर्सन का जी जी कि सर। प्रोडक्ट का अप्रूवल कंपनी को दिलाना है। उसके साथ बाकी के ये जो रूल्स है कि डेवलपमेंट के दौरान हेल्प करना है, बाकी ड्यूरिंग द आफ्टर डेवलपमेंट भी कुछ अगर जरूरत पड़ती है तो क्रॉस फंक्शनल टीम्स को मदद करनी है। उसके बाद प्रोडक्ट का अप्रूवल लाके दिया, उसके बाद भी उसका अगर लाइफ साइकिल मेंटेन करना है तो उसका वेरिएशन फाइल करना है या रिन्यूअल फाइल करना है, ये भी काम रेगुलेटरी का है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर द मेन रोल्स ऑफ अ डीआरए प्रोफेशनल। ओके। Here we will see how the DRA department works in a pharmaceutical company. So first, the marketing team makes a survey of sale of a particular product in a country. Suppose a country है Vietnam. So the marketing company wants to expand their business in the Vietnam. So team visits in the Vietnam or does a survey on online basis. They appoint a client in Vietnam, which has a local base in that country. And with the help of that client, they take a survey of highest selling products, range category of products कौन से है वो उसका इंफॉर्मेशन लेती है मार्केटिंग टीम, और उसमें से हम कौन सा मतलब कंपनी कौन सा बनाती है, खुद मैन्युफैक्चर कौन सा करती है, उसका फिर शॉर्ट लिस्टिंग होता है वो प्रोडक्ट्स का, उसको हम इंटरेस्टेड प्रोडक्ट्स बोलते हैं। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ इंटरेस्टेड प्रोडक्ट्स which are taken by the marketing team, and these list of interested products are discussed with the DRA team to again shortlist that products। मतलब क्या है कि कौन से प्रोडक्ट का डोजियर हम दे सकते हैं या कौन से प्रोडक्ट का हमको कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए, ये सब वो डिस्कशन होता है with the DRA, between the DRA team and marketing team। So then the list is interested product की list finalize होती है। तो after finalization of this list, the marketing team raise the DRF, that is DRF मतलब dossier request form। अभी ये dossier request form पे मार्केटिंग टीम के मैनेजर का भी साइन होता है, कुछ कंपनीज में कंपनी का एमडी भी मतलब जो ओनर रहता है वो भी साइन करता है इस पे, क्योंकि उसको भी पता होना चाहिए कि बाबा ये कंपनी मतलब हम ये प्रोडक्ट को इस कंट्री में रजिस्टर करने जा रहे हैं, क्योंकि कभी भी एक प्रोडक्ट रजिस्टर अगर करना है तो उसके साथ उसकी एप्लीकेशन फी भी सबमिट करनी पड़ती है। सो दैट टाइम द ओनर हैज टू बी टेकन इन द कंसर्न। सो the DRF, that is dossier request form, has the sign or it is approved by the marketing manager, then the MD of the company, then that DRF comes to the DRA department। तो DRA department का जो मैनेजर है उसका भी साइन होता है उस पे। तो उसमें क्या रहता है dossier request form में, तो प्रोडक्ट का नाम रहता है, उसका पैकिंग कौन से पैकिंग में वो प्रोडक्ट रजिस्टर करना है वियतनाम में वो रहता है, और टेंटेटिव डोजियर फाइलिंग डेट उधर लिखी रहती है। तो मतलब ये डेट तक डोजियर फाइल होना जाना चाहिए। अप टू दिस डेट द डोजियर हैज टू बी सबमिटेड। So all this signed DRF will be then kept in the log of a DRA team। So after the DRF is received, the DRA team goes through the guideline of that respective country and check the availability of the documents. If the documents are not in their folders, they will request the documents to the respective site, that is manufacturing site. Then after collection of all the documents, they will compile and they will make a dossier of that all the documents, and with that dossier
samples are also submitted to the authority. I have a doubt here. Yes. What are the information present in the dossier request form, sir? Yes, the information is that the name of the product, the pack style in which the product is to be registered in a respective country, and then the in the country it is to be registered, then the tentative date up to which the dossier should be submitted to the authority. So this type of information. This is a internal document. In some company, you will find additional information also, but minimum this information will be there. Okay, so that is based on the company's interest, or it is based on the country's interest, sir? What the format of the DRF? No, sir. The packaging style and all those stuff. Abhi, the pack style is mainly based on the country's requirements. मतलब वो country में अगर टेंस का blister ही mostly sale होता है product का, तो the company also prefers that pack style only. Annual blister है तो annual blister में ही submit करेगी, टेंस के blister में ही sale करेंगे. Additional क्योंकि ये कैसा रहता है कि the pack style and the tense blister or all this is also based on the type of a disease for which that product is going to be used. Okay, So sir. Okay, sir. this is the mimic of a already well-established product in that market. Nothing extra will be done for that pack style or anything else. Mm-hmm. Okay, sir. So, what is product life cycle maintenance, sir? Product life cycle matlab whenever product is approved, initially approved, first time approved. Suppose you have made a dossier, whole dossier, you have submitted it, and the product gets approved. Product when gets approved, it has a validity of 5 years or 3 years based on the country's regulations. Some countries give a validity of 5 years, some countries give a validity of 3 years. After the completion of 5 years, you cannot market that product in the country because validity is expired. But the marketing team, if wishes to again extend the validity because they are still finding a potential of that product sale in that market, then they will tell the regulatory department that you renew the license of this product for again 5 years because we are seeing a potential of sale in that market. So RA person will file a renewal dossier for this product and again extend the validity of the product for further 5 years or further 5 years. So marketing team can sell that product for again 5 years in that market. So the life cycle of that product is increased. अगर हमने renew ही नहीं किया तो that life of the product will end at there only. We have increased the life of that product by further 5 years. In that way, the life cycle is there. This is related to renewal, बराबर? लेकिन variation मतलब क्या है कि variation means it is a change to the registered information. Suppose you have a product approved in a particular market with a 5 lakh batch size. So now you are willing to take a 10 lakh batch size. So that is a variation to the registered information because initially you have not taken approval for 10 lakh batch size. So in that concern, you have to submit a variation. It is a type of a submission. You have to submit a variation to take the approval for the 10 lakh batch size. So after approval of the 10 lakh batch size, again you are means extending the life of the product or maintaining the life of the product because you are continuously making changes to the registered information. You are making the product live in the market
So in that way, the life of the product will be maintained and that product will be kept alive in the market. So to make the product life cycle alive, we have to continuously make the variations or renewals so that product life cycle will not end in the market. So that is based on the marketing call mainly, because if they are not seeing any market potential, so they will clearly say that don't renew the license of this product, we are not willing to sell any product, so the life of the product will end. So in that concern, the product life cycle is the meaning of that word. Okay, sir. Okay, thank you. Hello, sir. Yes. Yes, sir. In a dossier request form, you have mentioned, you have told that the product, right? Product name. So what is product name, how they will provide, like how they will suggest? Because somewhere they will suggest as a generic name, something like somewhere they will provide some like brand name. In which basis they are just providing that thing? At the time of a DRF, based on the generic name only the product will be filed. If there is a as such requirement from the country that your product should have the brand name, then they will provide. Otherwise, mostly the products are registered in the generic name only. अगर brand name का requirement है, so that will be finalized also based on the we have to take the approval from the authority that we are giving a brand name for our product, this particular brand name to a product, because that brand name should not match to any other any other product also which is already in the market. So before giving any brand name to the product, the authority checks that any similar product brand name is there in the market already available or not. If the brand name given by the company is unique, it is not copy paste of anyone else, then that clearly allots that brand name that you can use this brand name for selling of your product. Mainly क्या है कि ये जो brand names बनते हैं या डिसाइड किए जाते हैं, ये तो कुछ तो कंपनी के नाम का एक शॉर्ट फॉर्म रहता है और एक तो डिसीज का नहीं तो एक कुछ तो प्रोडक्ट के ही कुछ इनिशियल्स रहते हैं, उसके ऊपर वो बनाया जाता है. तो मोस्टली ये क्रिएटिविटी है और जितना वो कैची रहेगा ब्रांड नेम उसके ऊपर वो डिसाइड किया जाता है. So that is a call of a PMT department, that is product management team, which is in the pharma company, working in the company. That team has a working specifically for this brand name finalization. So that is a or directly कैसा है, regulatory person is not directly involved in finalization of any brand names. Okay, sir. It is totally suggested by the marketing team because they are more familiar with the brand names in that particular country. कौन से brand name से कौन सा product उधर सेल हो रहा है और ये नाम रखा तो कितना वो ज्यादा रिमाइंड होने में अभी आसानी होगी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को भी और पेशेंट्स को भी. So that is a totally marketing call for deciding the brand names. Okay, sir. मोस्टली जो डोजियर्स जो बनाए जाते हैं ना, वो पूरे जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो जेनरिक नाम से ही बनते हैं. क्योंकि अभी सपोज आप वियतनाम में डोजियर सबमिट कर रहे हो तो उधर आपने ब्रांड नेम सिलेक्ट किया एक पर्टिकुलर कोई, लेकिन अगर सेम डॉक्यूमेंट्स आपको दूसरे कंट्रीज में भी रजिस्टर करते समय अगर यूज करने हैं तो उधर अगर ब्रांड नेम अलग है तो आप वो सेम डॉक्यूमेंट्स नहीं यूज कर सकते हैं. अगर जेनरिक नेम से अगर कर रहे हो तो सेम यूज कर सकते. सो मोस्टली ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन द नेम ऑफ अ जेनरिक ओनली. सिर्फ जो एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स जो रहते हैं मॉड्यूल 1 के जो लीगल डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उस पे सिर्फ ब्रांड नेम लिखा जाता है. बाकी जो क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं या प्री क्लिनिकल या क्लिनिकल डॉक्यूमेंट्स जो रहते हैं वो जेनरिक नाम में ही रहते हैं. Okay, sir. So after filing of the dossier,
the country evaluates, the authority evaluates the dossier, and if they are having any query, they will send us the query that you submit this additional data, or you give clarity on this data, how you have generated this data. So after successful completion of the query responses, the product approval is allotted to the company. Okay, so after the product approval, again the main role of the regulatory person is that to maintain the product life cycle of that product. So they have to do the variations to the registered information if they are willing to make the product alive in the market, and if they want to extend the validity of the license, they have to renew the license. That is, they have to submit the renewal dossier in the to the authority. Any doubt in this working structure of the DRA department? No, sir. Next is innovator drug and generic drugs. So innovator drug, also called as a reference drug, drug for which a new drug application has been submitted to a regulatory authority and product approval granted. Innovator drugs are protected by a patent period. So can anyone tell me what is meant by a patent period? The period through which any other companies cannot manufacture or sell a particular drug. Yes, right. So it is a period in which only the innovator company can market their product. No one else, that is, no generic company can enter the market. So mostly in US market, 20 years patent period is there. So in that 20-year period, only the innovator company can market their product. So this is a period given. Why this patent period is given to the innovator company? Can anyone tell the reason? For commercial benefit. And to fulfill the expenditure which is invested to innovate the new drug. Yes. Innovator company has already they have expenditure, high expenditure on the R&D of that drug. So to get that expenditure overcome from the market, they have given this 20-year period. मतलब ये 20-year के पीरियड में वो पूरा मार्केट का वो उनका जो कैपेसिटी है वो एंजॉय करें, और वो ज्यादा से ज्यादा जितना उनका एक्सपेंडिचर हुआ है R&D डेवलपमेंट में, क्लिनिकल ट्रायल्स में, प्री क्लिनिकल स्टडी में, वो सारा एक्सपेंडिचर वो मार्केट से वसूल कर सके. Sir, is there any persons who is not belongs to pharma can go in regulatory affairs, sir, like life science students and other? This can go in the regulatory affairs domain. Any life sciences person can also go to the regulatory affairs field also. Then which domain is exclusive for pharma professionals, sir? Which profession, which department you are talking about, right? Yes, sir. Since we are saying that a lot of domains are like shared by our life science professionals too. So which domain is exclusive for pharma graduates or pharma professionals as far as industry and market is concerned? Okay, so it depends on the expertise you hold. That is, if you are holding expertise, that is M.Pharm in Sutics, so it is preferred that you should go in the, of course, it is as per your interest also.
F&D is most preferable by the companies also. The pharmaceutics candidates are mostly preferred. And if you are a pharmacologist in you should the clinical trials, or they mostly prefer the pharmacologists, M.Pharm pharmacologist, or having a doctorate that is in a pharmacology. So they are mostly preferred. Chemistry graduates or postgraduates are in the development of the methods or this type of. So mostly this is dependent on your interest also and the degree which you are holding. And if you are holding any additional experiences related to that field, which is relevant to your interested field, that is regulatory affairs, you can move to the other fields also. So a statistics person or a QC person or a production person can be easily relocated to the regulatory domain also. So it is mostly dependent on your interest. Okay. Is there any additional benefit for pharmacy professional students in DRA, sir? Such if you are talking about fresher, you are at a fresher level, right? Yes, sir. Yes, sir. I'm a fresher right now. I have completed my graduation in 2022. Sorry. Yes. So there is, as a fresher, I am talking about. If you are having basic knowledge of if you are a chemistry graduate in a BSc or any other graduations, and somewhat you have again any experience or you have done any courses related to regulatory affairs, you can easily move to the regulatory department. So of course the pharma professionals have a they are preferred because they have studied related to the medicines. But other life sciences graduates are also taken into consideration because they have also gone through the analytical background, or these types of backgrounds are there. They have studied in their graduation period. So chemistry graduates have well knowledge of a development of a API or a development of a method. This type of for this type of domain, which is actually a part of a regulatory affairs also. So other life sciences graduates are preferred. So there are pros and cons of every pharma professional also and other life sciences graduates also. So there is nothing like that. Pharma professionals are only preferred in the this domain. Nothing like that. So if you are feeling like that way, so this is wrong. Nothing like that, because I have seen most of the life sciences graduates at higher positions in the regulatory domain also and in the other domains also. So that is no concern. Okay, sir. Okay. Next is generic drugs. The drug which is a copy of an innovator drug and is equivalent in terms of safety, efficacy, dosage, and use is called a generic drug. So most of us will know that generic drug is a copy paste of a innovator drug. Generic products are manufactured and marketed after the expiration of a patent period of innovator product. So generic medicines are typically 20 to 90% cheaper than innovator drugs because they have no higher R&D expenditure. That's why they are sold in a most less cost. Any doubt in this innovator drug and generic drug definition? No, sir. Why the rate is cheaper, sir?
Sorry, why there is a cheap price for generic drugs, sir? cheap price क्यों है? क्योंकि generic drugs do not involve the higher expenditure on the research and development of the molecule, because they directly take the innovator drug from the market. They just use the same excipients or same grade of API what the innovator drug has used, and develop the same for that is product. No extra level of R&D is involved in that, and also no preclinical studies involved, because already the safety of that product is established by the innovator company, and also no other clinical studies are need to be performed. That is clinical trials I'm talking about, that is phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. So these trials are not need to be performed by the generic company. Only the generic company has to perform the bioequivalence study. Bioequivalence study मतलब rate and extent of availability of the drug at the systemic circulation. ये सिर्फ generic product का innovator product के साथ compare होना चाहिए. इतना comparison अगर generic company ने दिखा दिया तो that product is allowed for or suitable for sale in the market. सो एक्स्ट्रा कुछ स्टडी करने की जरूरत नहीं है, तो उनका एक्सपेंडिचर भी ज्यादा नहीं है उस पे, तो दे कैन सेल द प्रोडक्ट एट अ चीपर कॉस्ट. सर बायोइक्विवेलेंस में कितना परसेंट चाहिए सर? बायो इक्विवेलेंस परसेंट मतलब सर कितना परसेंट मैच करना चाहिए उसमें? मतलब पास होने जो के लिए तो उसमें 85 to 125% कॉन्फिडेंस इंटरवल के बीच में होना चाहिए. ओके सर. ये जो रेट एंड एक्सटेंट ऑफ अवेलेबिलिटी है, एरिया अंडर द कर्व या सी मैक्स टी मैक्स, जी मोस्टली मैच होने चाहिए. जितने टाइम में वो अवेलेबल हो रहा है ब्लड में इनोवेटर प्रोडक्ट, उतने टाइम में जेनरिक प्रोडक्ट भी होना चाहिए. सो दैट शुड मैच. Mostly 85 to 125% is the range. If in that range, if it falls, then it is considered as a bioequivalence. So due to less amount of expenditure on the development, the generic manufacturers can sell their product at a cheap cost. Okay, the next sir. is the next is drug development process. So how the development of a generic product I am talking about here happens in a pharmaceutical company. So अगर एक generic product develop करना है तो पहले क्या होता है? First process is searching of innovator drug product. Then after searching, you have found the innovator drug. Suppose you are willing to market a product in a US market. So you have to take an innovator product from that market. You have to test that product. You have to establish the characteristics of that innovator product. Characteristics मतलब उसका description क्या है, उसका हार्डनेस क्या है, फ्रायबिलिटी क्या है, उसका डिजो कितने टाइम में आ रहा है, उसका एसे कितना है, what are the impurities involved in that product. So all these characteristics are established after the testing of the innovator product, right? Then drug substance and excipients are finalized based on the innovator drug product. इनोवेटर प्रोडक्ट ने जो ड्रग सब्सटेंस यूज किया है और जो एक्सिपिएंट्स यूज किए हैं वही सेम एक्सिपिएंट्स और एपीआई जेनरिक प्रोडक्ट भी सेम वो एपीआई और एक्सिपिएंट लेके ही जेनरिक प्रोडक्ट का डेवलपमेंट भी शुरू होता है. सो दे कैनॉट गो टू द अदर एपीआई और अदर excipient, because if they are going to a other excipient, then it will be not considered as a generic product, because generic product का नाम ही है कि बाबा उसका मीनिंग ये है कि आप डायरेक्टली इनोवेटर प्रोडक्ट ले रहे हो और उसको कॉपी पेस्ट कर रहे हो. आप अलग से कुछ उसका डेवलपमेंट नहीं कर सकते, नहीं तो वो फिर से वो इनोवेटर प्रोडक्ट की ही लाइन में चला जाएगा. सो यू कैनॉट मेक एनी इम्प्रूवमेंट्स, यू जस्ट हैव टू take the innovator product, you have to copy that and formulate your own product.
Then after the finalization, checking of the drug substance and excipients compatibility with each other. So compatibility means we have to check the drug substance is compatible with the excipients or not. Compatible means some quantity of drug substance is kept with the excipients, and for this the duration is for 4 weeks at 40 degrees Celsius temperature and 75% relative humidity. This is kept, and if there is any change in the description, and if the assay value of the drug substance is changed or any impurities are formed in that particular combination, all this is checked, and based on these parameters the API and excipients are compatible with each other or not, it is checked. After it is found that they are compatible, then only they can be used in the formulation of a product. Mostly in the time of a generic product development, API and excipients are mostly compatible with each other because their compatibility is already established by the innovator product. So you are not using any other excipient. You are already using the excipients which are used by the innovator company. So this issue will not arise in the case of formulation of a generic product. Then after checking the compatibility, then R&D trials, that is research and development trials, are conducted. Matlab small batches are taken of a product, that is 5,000 tablets, 3,000 tablets. These small scale batches are taken, and the process is finalized on a small scale batch size. Then these R&D trial batches analysis is done, that's it, testing is done to check whether these R&D batches are formulated as per our expectation or not. So they are dissolving, or they are having a proper hardness or not, they are dissolving and within a particular time or not. So all this is checked. So after testing the R&D batches, the parameters of R&D batches are tested with the characteristics of the innovator drug, which we have already established. So if these characteristics match, then we can consider that our development is going in a right direction. Then development of the container closure system for drug products. So mostly the similar container closure system is used for the generic product also. मतलब जो इनोवेटर प्रोडक्ट ने अगर एल्यू ब्लिस्टर में पैक किया है, उसका प्रोडक्ट अगर एल्यू ब्लिस्टर में ही है मार्केट में, या HDP कंटेनर में है, या एम्बर कलर ग्लास बॉटल में है, तो ये ऐसे सेम टाइप का कंटेनर क्लोजर सिस्टम ही जेनरिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर भी यूज करता है, क्योंकि उसको एडिशनल कुछ स्टडी परफॉर्म करने की जरूरत ना पड़े इसके लिए. Then next is conducting stability studies along with the bioequivalence studies. So the batches which are manufactured are kept for stability studies, and further they are submitted for the bioequivalence studies. Can anyone tell me what is meant by stability studies and why they are done? Anyone? From stability background or QC background here? Okay. Stability study means whenever we wish to market any product or we wish to register any product in a particular country, we have to monitor the stability of that product initially at a particular storage condition.
Means if you are willing to market in the US market, what is the climatic condition of a US country? Mostly it falls under 25-60, right? That is 25 degrees Celsius temperature will be there and 60% relative humidity will be there. So we have to check the stability of our product at 25-60 condition. Means how our product is behaving at this condition. We have to keep, there are some stability chambers are there. मतलब जैसे we can consider here example of our फ्रिज में जैसे टेम्परेचर होता है सेट कि 5 डिग्री सेल्सियस एंड -20 degree Celsius in the freezer. In the same way, in the QC department or in the stability department, there are chambers. They are having set temperature of 25 degrees Celsius and 60% relative humidity. In that, we have to load the samples. That is, we have to keep the blisters. And at a particular time interval, we have to check the means withdraw the samples from that stability chamber and analyze the samples, and we have to check if there is any change in the physical, chemical, biological or microbiological characteristics of the product due to the effect of temperature and humidity. So Overall, we can say we analyze or determine the life period of drug as per different parameters. Can we say this thing? We can determine. Sorry, I have not. Life period of a drug. Yes, we can determine the shelf life of the product or expiry period of the drug. Yes, you are right. Okay, So, sir. based on the stability data, based on the stability study, we can determine the shelf life of the product. So, at how much period, up to how much period that product will remain stable, मतलब 24 months तक या 36 months तक स्टेबल रह सकता है. So, ऐसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं स्टेबिलिटी स्टडी के बेसिस पे. So that is the main reason of conducting the stability study. Hello, Any doubt in the drug development process? Yes. Rupesh. Actually, I have one question regard the retest period of the drug substance. Retest period of the drug substance exact what established in stability study. Retest period is applicable for drug substance. You are right. Retest period means what? Yes. After a particular time, means most of the finished product manufacturers allot a 1 year of retest period to a drug substance. मतलब क्या होता है उसमें कि सपोज आज टेस्टिंग किया, आज एपीआई का लॉट आया ड्रग सब्सटेंस मैन्युफैक्चरर से और आज उसका टेस्टिंग किया, तो उसका रिटेस्ट पीरियड दिया जाता है अगले 1 साल तक का. मतलब जब भी अगला 1 साल तक वो विद इन द लिमिट उसका रहेगा. लेकिन जब भी वो सपोज मार्च, सपोज इन नाउ वी आर इन द मार्च, सो मार्च 24 जब भी आएगा तो उसका रिटेस्ट फिर से मतलब उसका टेस्टिंग करेंगे. Okay. Because Okay. to know that the API is still in a मतलब हाँ, मतलब वो फॉर्मुलेशन के लिए यूज करने के लिए फेवरेबल है कि नहीं वो एपीआई, इसके लिए वो हर एक ईयर का रिटेस्ट पीरियड दिया जाता है. Okay. लेकिन ड्रग सब्सटेंस की वैलिडिटी नहीं रहती क्या उसका शेल्फ लाइफ वगैरह? एज सच शेल्फ लाइफ उसकी नहीं रहती, रिटेस्ट पीरियड ही रहता है एपीआई का. क्योंकि क्या रहता है कि मोस्टली अभी अब अगर आप देखोगे कि एपीआई सप्लायर भी जो रहते हैं वो भी 24 मंथ्स या 36 मंथ्स या 60 मंथ्स तक का रिटेस्ट पीरियड ही देते हैं. शेल्फ लाइफ एज सच कंसेप्ट ही एपीआई के कंसर्न में नहीं है, क्योंकि जब भी ये 36 मंथ भी पास होगा तो फिर से वो टेस्टिंग करेंगे. अगर पूरे स्पेसिफिकेशन से वो अगर पास हो रहा है तो दे विल अगेन मतलब वो सप्लाई कर सकते हैं वो एपीआई का, यूज कर सकते हैं
फर्दर, हाँ यस, क्योंकि एक तो क्या है मालूम है, एपीआई एज सच एक सिंगल एंटिटी है, बराबर, उसका किसी के साथ जब भी आप सिंगल में रखोगे तो उसका डिग्रेडेशन एज सच इतना नहीं होगा, क्योंकि उसका दूसरे किसी के साथ इंटरेक्शन एक तो नहीं होगा, क्योंकि आपने उसमें कुछ एक्सिपिएंट्स नहीं है या कुछ और कुछ नहीं है। जब भी आप वो एक्सिपिएंट्स के साथ मिक्स करते हो या और कुछ इंग्रेडिएंट्स का साथ मिक्स करते हो ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रोडक्ट, देन द प्रॉपर्टीज गेटिंग चेंज्ड, तो उसका फिर 24 मंथ्स या 36 मंथ्स का शेल्फ लाइफ हमको प्रोडक्ट को देना पड़ता है, क्योंकि दैट इज इन एसोसिएशन विद द एक्सिपिएंट्स, सो द डिग्रेडेशन विल टेक प्लेस इन अ फास्टर वे एज कंपेयर्ड टू द एपीआई विच इज केप्ट अलोन, सिंगल में जो भी रखते हैं तभी। सर क्या हम शेल्फ लाइफ को हाफ लाइफ कंसीडर कर सकते हैं सर? नहीं, शेल्फ लाइफ इज डिफरेंट एंड हाफ लाइफ इज डिफरेंट। हाफ लाइफ ये बाय इक्विवेलेंस स्टडी और उसमें जब भी वो अलग कंसेप्ट है। Other doubt? So what is the difference between bioequivalence, therapeutic equivalence, and pharmaceutical equivalence? Bioequivalence, therapeutic equivalence and pharmaceutical equivalence. Yes, sir. Yes. पहले बायोइक्विवेलेंस का बात करते हैं। बायोइक्विवेलेंस मतलब जो जेनरिक प्रोडक्ट है उसका बायोअवेलेबिलिटी और जो रेफरेंस प्रोडक्ट है उसका बायोअवेलेबिलिटी सिमिलर है, तो हम वो बोलेंगे दोनों प्रोडक्ट्स बायोइक्विवेलेंट। ये हो गया। तो दूसरा है थेरेपेटिक इक्विवेलेंस। थेरेपेटिक इक्विवेलेंस मेजर किया जाता है बेस्ड ऑन द थेरेपेटिक इफेक्ट दे आर गिविंग, एंड दिस इज मेजर्ड ऑन द क्वालिटेटिव बेसिस, थेरेपेटिक इक्विवेलेंस। नेक्स्ट इज द फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस, मतलब सेम ग्रेड का एपीआई यूज कर रहे हो और एक्सिपिएंट सेम ग्रेड के हैं, सो देन वी कैन कंसीडर दैट द both the products are pharmaceutically equivalent. Pharmaceutical जो composition है उनका अगर वो similar है तो we can consider that they are pharmaceutically equivalent to each other, except some of the salt and esters are different. It is acceptable, but as such अगर देखा जाए तो ये related to qualitative composition है pharmaceutical equivalence. So one is related to the bioavailability, one is related to the therapeutic effect, and one is related to the composition of the product. Okay, sir. So generic drugs will have all the three equivalents with the innovator drug, right, sir? Yes, yes, yes. So what will be the difference between the innovator and generic drugs? Only the brand which sells it? Brand it sells is, and you can and the cost. Okay, so the reduction in cost and the company which sells it makes the only difference between the innovator drug and the generic drug. Yes, yes, yes. Okay, sir. सर फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस में सर और सारी चीजें सेम होती हैं सर इसमें, जैसे एपीआई और सर जो एक्सिबिएंट वगैरह हो गया सर, सारा सेम होएगा सर इसमें? Sorry? फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस में सब कुछ सेम होगा सर, जैसे कि एपीआई और एक्सिबिएंट वगैरह सर, इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा अगर हम कंपैरिजन करेंगे सर किसी और के साथ? Yes, yes. सिर्फ अगर सॉल्ट और ईस्टर अगर कुछ उसके फॉर्म में अगर चेंज हो रहा है दैट इज एक्सेप्टेबल, बट एज सच जो मेन इंग्रेडिएंट है वो सेम ही रहेगा। ओके सर। और सर सेल्फ लाइफ को क्या पोटेंसी और इफेक्टिवनेस पे देखा जाता है सर? शेल्फ लाइफ को पोटेंसी मतलब ऐसे वैल्यू जो रहता है, अभी शेल्फ लाइफ इज एप्लीकेबल फॉर ड्रग प्रोडक्ट्स, सो उसमें ऐसे वैल्यू चेक किया जाता है। ऐसे वैल्यू मतलब अभी कैसे कि हाउ मच अमाउंट ऑफ एपीआई यू आर experiencing when it is tested. 95 to 105 is the limit for the checking the assay value. Okay, now,
हाउ मच अमाउंट ऑफ एपीआई इज देयर. अगर 95 के नीचे अगर जा रहा है तो दैट प्रोडक्ट इज फेलिंग इन द स्टेबिलिटी. मीन्स हम चेक करेंगे उसमें कि कितना % एपीआई उसमें अभी है. अगर 90 से कम 95 से कम है तो मतलब कि वो फेल हो जाएगा. फेल हो जाए क्योंकि वो डिजायर्ड इफेक्ट नहीं दे पाया है, क्योंकि उसमें उतना एपीआई है ही नहीं जो डिजायर्ड इफेक्ट दे सके. ओके सर. मीन्स वी कैन से मतलब हम चेक करते हैं उसमें एपीआई. हाँ, जब भी सपोज ड्यूरिंग द स्टेबिलिटी स्टडी हम क्या चेक करते हैं कि बाबा उसमें उसका डिस्क्रिप्शन सेम रह रहा है क्या, उसका फ्राइबिलिटी चेंज हो रहा है, हार्डनेस चेंज हो रहा है क्या, एवरेज वेट चेंज हो रहा है क्या, डिसइंटीग्रेशन डिसोल्यूशन ऐसे इम्प्योरिटीज कुछ बढ़ रही है क्या, ऐसे वैल्यू चेक किया जाता है. मतलब उसमें 24 मंथ्स तक, मतलब 24 मंथ्स का आपने अगर शेल्फ लाइफ उसको अलॉट किया है, एट द एंड ऑफ 24 मंथ्स ऑल्सो 95% के नीचे एपीआई का कंटेंट जाना नहीं चाहिए. ओके सर. तो वो अगर जा रहा है तो आपको you have to again formulate that product, or you have to check the container closure system so that it will not come below the 95%. अगर उसके नीचे आ जाता है तो वो थेरेपेटिक इफेक्ट जो डिजायर्ड चाहिए वो दे नहीं पाएगा, इसकी वजह से वो फेल हो जाएगा. ओके सर. तो ऐसे पोटेंसी ड्यूरिंग द शेल्फ लाइफ चेक की जाती है. नेक्स्ट है गाइडलाइंस यूज्ड इन द रेगुलेटरी अफेयर्स. फर्स्ट इज ICH गाइडलाइंस, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट. ICH गाइडलाइंस कौन से भी आप मतलब रेगुलेटरी अफेयर्स के डोमेन में काम कर रहे हो तो ICH गाइडलाइंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है. उसके बाद है रेगुलेटरी गाइडलाइंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज रिलेटेड टू वेरिएशंस एंड रिन्यूअल्स. इसके अलावा भी बहुत सारे गाइडलाइंस है जो साइट रजिस्ट्रेशन के लिए है या कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए है या और कुछ डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स जो स्पेसिफिक कंट्रीज में ही सबमिट किए जाते हैं, वो कंट्रीज के लिए वो डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए वो डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन के लिए जो गाइडलाइंस रखती है. बहुत सारी गाइडलाइंस है. इट इज a number of guidelines are there, but mainly we are covering here ICH guidelines. Can anyone tell me what is the full form of ICH? International Conference for International Council of Harmonization, sir. Yes, International Council for Harmonization of Technical Requirements required for registration of pharmaceutical products for human use. Yes. First, we will see different licenses required for manufacturing and sale of drugs in India. ये लाइसेंसेस इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोई भी कंपनी जब भी प्लांट एस्टेब्लिश करती है तो उसको ये लाइसेंस लेने पड़ते हैं इंडिया में. ये लाइसेंसेस अप्रूव होने के बाद ही वो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकती है. So all of us, we have studied these licenses and what is the meaning of these licenses in our curriculum. That is, first is Form 25, that is a license to manufacture for sale or for distribution of drugs other than those specified in Schedule C, C1 and X. Then Form 25 is a loan license to manufacture for sale or for distribution of drugs other than those specified in Schedule C, C1 and X. So Form 25 and 25A is for drugs which are other than C, C1 and X. So please explain these things in Hindi. Okay. Form 25 मतलब ये लाइसेंस है जिसके लिए मतलब अगर सपोज कंपनी अदर देन शेड्यूल C, C1 एंड X वाले प्रोडक्ट्स अगर मैन्युफैक्चर सेल करना चाहती है और अगर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है तो उनको फॉर्म 25 में लाइसेंस इशू करवा के लेना है स्टेट FDA से. जो महाराष्ट्र सपोज प्लांट है महाराष्ट्र में, ठाणे में प्लांट है, तो महाराष्ट्र स्टेट FDA जो है उससे उनको फॉर्म 25 में वो लाइसेंस इशू करवा के लेना है. these are the manufacturing licenses and these are the forms in which the license is allotted by the state FDA to the respective company. After allotting this license,
then only the company can manufacture the drugs which are specified in Schedule C, C1 and X. Sorry, other than Schedule C, C1 and X. Then Form 25 is loan license. Loan license मतलब suppose पर्टिकुलर कंपनी है अजंता फार्मा और उनके पास टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है, और दूसरी कंपनी है सिप्ला लिमिटेड, उनके पास टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी है. सो इफ अजंता फार्मा सीज एनी wants to manufacture any product from the any tablet product from the Cipla, then they have मतलब उनको फिर ये फॉर्म 25A में लाइसेंस अप्रूव करा के लेना है ये स्टेट एफडीए से. मतलब उसमें म्यूचुअल एग्रीमेंट रहेगा सिप्ला और अजंता का, और फिर अजंता कंपनी क्या रहेगी, वो स्टेट एफडीए को एप्लीकेशन भेजेगी कि वी आर विलिंग टू मैन्युफैक्चर आवर टैबलेट प्रोडक्ट इन द सिप्ला कंपनी साइट, सो प्लीज ग्रांट अस द अप्रूवल ऑफ लाइसेंस इन फॉर्म 25A. तो हमको सिप्ला कंपनी से ये टैबलेट्स मैन्युफैक्चर करा के लेनी है, तो हमको फॉर्म 25A में आप ये लाइसेंस अप्रूव करा के दो, सो दैट वी कैन मैन्युफैक्चर दिस प्रोडक्ट. इसमें लोन का तो कोई सर कोई वो नहीं है ना सर इसमें? नहीं, लोन मतलब क्या है, लोन लाइसेंस मतलब वी आर मतलब हम उसका फैसिलिटीज यूज कर रहे हैं. ओके सर. एक प्रकार से हम उसका जो फैसिलिटीज है, खुद की तो फैसिलिटी है नहीं, तो उसका हम टेम्पररी बेसिस पे हम ये दूसरी कंपनीज का फैसिलिटी यूज कर रहे हैं. लोन मतलब ऐसा फाइनेंशियल इस पे आप ये टर्मिनोलॉजी नहीं है. ये थर्ड पार्टी में रहेगा सर? हाँ, थर्ड पार्टी Hello? बोल सकते हो. हाँ बोलिए. मीन्स एग्जैक्ट उसके पास कौन से गाइडलाइंस का ऑथराइज रहेगा. सपोज एनवीजा ब्राजील का एनवीजा है, उसकी तरफ से अप्रूव्ड रहेगा, उसके तरफ से लेगा ना लोन लाइसेंस उस टाइप का. सॉरी मतलब आपकी आवाज नहीं आ रही. एग्जैक्ट मेरे पास एनवीजा का अप्रूव्ड है और मुझे अदर कंपनी में नहीं है, तो मेरे से वो टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग करके लेगा, इस टाइप का मीनिंग है लोन लाइसेंस. हाँ बराबर. एक के पास अप्रूवल है लेकिन उसके पास उसका मैन्युफैक्चर करने का ये नहीं है, मतलब फैसिलिटी नहीं है, वो दूसरे कंपनी को अप्रोच करेगा, मुझे ये प्रोडक्ट बना के दे दो. ओके, एग्जैक्ट वही मीनिंग है ना लाइसेंस का. हाँ यस वही मीनिंग है. क्योंकि हर एक कंपनी के पास देखो अभी कैसा है कि हर एक कंपनी के पास हर एक प्रोडक्ट का डोसेज फॉर्म मैन्युफैक्चर करने का क्षमता होता ही ऐसा नहीं है. हर एक कंपनी का स्पेशलिटी रहता है. अभी कुछ कंपनी सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स जो रहती है उसका मैन्युफैक्चर करने का उनका कैपेसिटी रहता है. अच्छा, तो उनसे मैन्युफैक्चर करा के लेते हैं, क्योंकि उतना सारा एस्टेब्लिश करना कैपेसिटी, उसके लिए मैन पावर, उतना इक्विपमेंट का कॉस्ट, उसके लिए अलग से ब्लॉक बनाओ, ये सब बनाने से अच्छा है एक साधारण कंपनी से कांटेक्ट करो जो बनाता है रेगुलर बेसिस पे, और जिनके पास प्रोसेस सेट है, जिसके पास इक्विपमेंट्स है और जो लार्ज स्केल पे बना के दे सकता है, उस कंपनी को कांटेक्ट करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, मैं आपको ऑर्डर देता हूँ, आप मुझे बना के दे दो, हम ये फॉर्म 25A में हम लाइसेंस अप्रूव करा के लेते हैं, आप मुझे सिर्फ बना के दे दो प्रोडक्ट. थर्ड पार्टी है सर? हाँ थर्ड पार्टी सर ज्यादा. यस. So फॉर्म 25A कभी यूज होता है जब भी अदर देन दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C, C1 एंड X है प्रोडक्ट्स तो ही. उसके बाद है फॉर्म 26 सर्टिफिकेट ऑफ रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर फॉर सेल ऑफ ड्रग्स अदर देन दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C, C1 एंड X. मतलब ये रिन्यूअल लाइसेंस है. मतलब फॉर्म 25 या 25A में लाइसेंस मिल गया पहले इनिशियल 5 साल का वैलिडिटी आपको उस लाइसेंस का मिलता है. उसके बाद आपने लाइसेंस रिन्यू किया तो आपको फिर से फॉर्म 25 नहीं मिलता, आपको फॉर्म 26 मिलता है, और उस पे फिर फॉर्म 25 और 28A या फॉर्म 25A जो आपके लाइसेंस रहेंगे वो इनलिस्टेड रहेंगे. ऐसा रहता है. जब रिन्यूअल करते हो तो फॉर्म 26 मिलता है आपको. ओके, उसके बाद है फॉर्म 28
license to manufacture for sale or for distribution of drugs specified in Schedule C and C1 and excluding those specified in Schedule X. मतलब अगर शेड्यूल सी C1 में जो ड्रग्स हैं वो अगर मैन्युफैक्चर करने हैं या डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, सेल करने हैं, तो कंपनी के पास फॉर्म 28 में लाइसेंस होना जरूरी है। उसके बाद है फॉर्म 28A, ये भी सिमिलर है, जैसे लोन लाइसेंस रहता है वैसे, सिर्फ ये शेड्यूल सी एंड C1 जो प्रोडक्ट्स रहते हैं उसके लिए एप्लीकेबल है, अदर देन विच आर एक्सक्लूडिंग दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स। उसके बाद है फॉर्म 20F एंड और 20G, लाइसेंस टू सेल, स्टॉक, एग्जिबिट और ऑफर फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स बाय रिटेल और बाय होलसेल। रिटेल के लिए फॉर्म 20F है और होलसेल के लिए 20G है। तो ये शेड्यूल एक्स में अगर मैन्युफैक्चर करना है, सेल करना है, स्टॉक, एग्जिबिट या ये करना है तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए फॉर्म 20F में या 20G में। सो अभी मेनली क्या है कि आप अगर ROW रहेगा या ROW मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो अफ्रीका, एशिया, CIS मार्केट, ये जो है ये कंट्रीज को मोस्टली ROW कंट्रीज बोलते हैं। ये इधर ये कंट्रीज में रेगुलेशंस इतने स्ट्रिक्ट नहीं है जितने रेगुलेटेड कंट्रीज में। रेगुलेटेड कंट्रीज मतलब US, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, so these are considered as a regulated countries. Okay. Can anyone tell me what is Schedule C and C1? Sir, in Schedule C, Biological and other injectables. Sorry? the C1, the biological products. Biological products. बराबर है, हाँ। And C, parental products, sir. Special biological products, yes. And Schedule X? Sir, narcotics. Psychotropic drugs, बराबर, which are active on the CNS. I will show you the examples for these licenses. सर क्या जैसे अदर कंट्रीज के अंदर भी सर कुछ सिमिलरिटीज हैं सर, जैसे यहाँ पे इनमें ये शेड्यूल्स हैं सर? आपका क्वेश्चन में समझ में आया, क्या बोल रहे हैं? सर मैं कहना चाह रहा हूँ मतलब कि जैसे इंडिया के अंदर जो शेड्यूल्स हैं सर, हाँ, क्या अदर कंट्रीज के अंदर भी ऐसे ही शेड्यूल्स हैं, कुछ सिमिलर हैं या टोटली डिफरेंट है सर? सच शेड्यूल्स अगर देखोगे आप तो उधर पर्टिकुलर कंट्रीज के अकॉर्डिंग I am not recollecting now this information, क्योंकि मोस्टली इंफॉर्मेशन ये डिसीज, कौन से डिसीज के लिए प्रोडक्ट यूज हो रहा है इसके बेसिस पे कैटेगराइज होता है अदर कंट्रीज में। ऐसा अब तक तो मैंने देखा है, ऐसे शेड्यूल्स वगैरह ऐसे अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है कि कैटेगराइज कैसे किया है। ओके सर, आपको दिख रहा है ये फॉर्म 25 मैंने अभी इधर शेयर किया है? जी सर, जी सर। Yes, this is one example of a Form 25 license. This is a license issued by the Gujarat FDA. It is a license to manufacture for sale or for distribution of drugs other than those specified in Schedule C, C1 Annex. पहला हेडिंग है। उसके बाद नंबर ऑफ लाइसेंस एंड डेट ऑफ इशू है। देखोगे आप तो G25 are you all are able to see, right? है नंबर पहले दिया है G25 2078
एंड डेट कभी इशू हुआ है लाइसेंस 21/2/2015 को हुआ है ठीक और है ये सर। Directors of Messrs. Enzyme Biosciences Private Limited is hereby licensed to manufacture the following categories of drugs, being drugs other than those specified in Schedule C, C1 Annex, on the premises situated at Block 91. ये वो साइट का एड्रेस है, मैन्युफैक्चरिंग साइट का, ब्लॉक 91 प्लॉट C1, मोती रोली विलेज डिस्ट्रिक्ट सूरत. Then under the direction and supervision of the following competent technical staff. अभी इधर कॉम्पिटेंट टेक्निकल स्टाफ जो मतलब एक्चुअल में स्टाफ जो जिसके पास क्वालिफिकेशन है और जिसके पास एडिक्वेट एक्सपीरियंस है, उनकी लिस्ट भी अटैच की जाती है इसके पीछे. उस कॉम्पिटेंट टेक्निकल स्टाफ नेम्स दैट इज एज पर लिस्ट अप्रूव्ड एंड एनेक्स्ड. मतलब ये लिस्ट भी अप्रूव होती है, नेम्स जो रहते हैं ना कॉम्पिटेंट टेक्निकल स्टाफ, उनके वो भी अप्रूव की जाती है. मतलब ये पर्सन ये ब्लॉक संभालेगा या ये मैन्युफैक्चरिंग संभालेगा, क्वालिटी कंट्रोल संभालेगा, ये क्यूए पर्सन ये संभालेगा, ये सब उसके पीछे अटैच करना रहता है ये लाइसेंस के पीछे. उसके बाद नेम्स ऑफ द ड्रग्स, ईच आइटम शुड बी सेपरेटली स्पेसिफाइड दैट इज एज पर द लिस्ट अप्रूव्ड एंड एनेक्स्ड. Then the license shall be enforced from 21/2/2015 to 20/2/2020. मतलब 5 साल का वैलिडिटी है. उसके बाद जो स्टेट एफडीए का जो कमिश्नर है उसका साइन है इसके ऊपर. एंड सम कंडीशंस आर enlisted here that you have to follow these conditions. If you are breaking these conditions, then this license will not be valid. So this is one example of the Form 25. Any doubt in this image? No sir. Okay. Sir, is there any opportunity for DRA to work from home, sir? Sorry? Sir, is there any opportunity to work from home for DRA? For freshers, there is no opportunity. After experience, sir? After experience, you can get the opportunity. Okay. You can see here Form 28, sorry. Similar presentation. सिर्फ इधर फॉर्म का नंबर चेंज होगा, जिधर G25 था अभी G28 हो गया. बाकी सब सिमिलर प्रेजेंटेशन रहेगा. डायरेक्टर का नाम रहेगा, साइट का एड्रेस, अप्रूव्ड पर्संस की लिस्ट और अप्रूव्ड प्रोडक्ट की लिस्ट. सेम सिमिलर वैलिडिटी भी रहेगी इसकी 5 साल की ही. और नीचे कमिश्नर का साइन. ये हो गया. उसके बाद है फॉर्म 26. Is the Form 26, that is a renewal license. Certificate of renewal of license to manufacture for sale of drugs other than those. Either this is a error. You can see here certified that the license in Form 25, इधर Form 25 का license number दिया है, granted on this date. मतलब ओरिजिनल जब भी इनिशियल जब भी Form 25 ग्रांट हुआ था वो उसका डेट है. मतलब 1987 को फर्स्ट टाइम इस कंपनी को Form 25 इशू हुआ था. To Messrs. Rogue Chemicals Limited for the manufacture of the following categories of drugs other than specified in Schedule C, C1 and X. And इधर साइट का एड्रेस है. सिमिलर इसका भी 5 साल का वैलिडिटी है और इसमें भी पर्सन्स के नाम और अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स के नाम अटैच करने पड़ते हैं. So this is a Form 26, that is a renewal license. Any doubt in this terms? No sir. Okay.
Sir, I want to say one thing, sir. Your Sorry? voice is, sir. I want to say one thing, sir. Your voice is similar to Amit, sir. Okay. Are you Amit, sir? Yes. Now we are going ahead with the examples of the Schedule C drugs, that is biological and special products. In this serum that contains antibodies or solution of serum proteins intended for injection or vaccines for parenteral injection, insulin, ophthalmic preparations, sterile disposable devices for single use only. These are the examples of Schedule C drugs. Mostly vaccines जो है जो IV through inject किए जाते हैं, these comes under Schedule C drugs. Then examples of Schedule C1 drugs, other special products, that is drugs belonging to digitalis group, ergot group, not in a form to be administered parenterally. Then adrenaline and vitamin preparations, not in a form to be administered parenterally. Then liver extract and hormone preparations, not in a form to be administered parenterally. Then vaccines, not in a form to be administered parenterally. Then antibiotics and preparations, not in a form to be administered parenterally. Mostly शेड्यूल C1 ड्रग्स जो है वो एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स ही रहते हैं, लेकिन द टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विल बी अदर देन पैरेंटरल. The next is Schedule X drugs. These are psychotropic drugs acting on the CNS. Some of the examples are amibarbital, glutathione, pentobarbital, amphetamine, meprobamate, pencyclidine, barbital, and methamphetamine. So these are some of the examples. Next, we will see some of the introductory information related to the ICH guidelines. As we have already know that ICH means International Council for Harmonization of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use. So ICH works together with regulatory authorities and pharmaceutical industry to discuss scientific and technical aspects of pharmaceuticals and develop ICH guidelines. Can anyone tell me who are the founding members of ICH? USA, Japan, Yes. Europe. Sorry? USA, Japan, Europe. Yes, US, Japan, and Europe. Japan, Europe, and USA. Yes. So ICH started in year 1990. ICH mission is to achieve greater harmonization worldwide to ensure that safe, effective, and high-quality medicines are developed and registered and maintained in the most resource-efficient manner whilst meeting high standards. So, harmonization means ICH is willing to make a common requirement worldwide to ensure safe, effective, and high quality medicines are developed and registered and maintained. So they are willing to make a common requirement. मतलब जो रजिस्ट्रेशन के लिए या डेवलपमेंट के लिए एक हर पूरे दुनिया में एक कॉमन रिक्वायरमेंट होगी जिससे वो प्रोडक्ट डेवलप होगा, जिससे रजिस्टर होगा और जिससे उसकी लाइफ साइकिल भी मेंटेन होगी. Facilitate to manufacture the good quality product. Yes. So उसका मेन एम यही है कि
एक तो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा जो होता है हर एक कंट्री के लिए, आप ये स्टडी करो वो स्टडी परफॉर्म करो, वो प्रिवेंट करना, और क्वालिटी ड्रग पब्लिक को कम से कम समय में अवेलेबल करके देना। सो उससे कंपनी का भी टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, अथॉरिटी का भी टाइम बचेगा, और वो भी उनके सिटीजन्स जो है उनको कम समय में वो क्वालिटी प्रोडक्ट और कम कीमत में जो अवेलेबल होगा वो अवेलेबल करके दे सकते हैं। सो ये ICH का मिशन है। First, we will see why there is a need to harmonize the requirements. The realization that it was important to have an independent evaluation of the medicinal products before they are allowed on the market was reached at different times in different regions. However, in many cases, the realization was driven by tragedies such as that with thalidomide in Europe in the 60s. So, जैसे अभी ये इधर एग्जांपल क्या दिया है कि थैलिडोमाइड की ट्रेजेडी हुई यूरोप में 1960s में, उससे यूरोप की जो गवर्नमेंट है उसको रियलाइज हुआ कि ड्रग्स पे रेगुलेशंस होना बहुत जरूरी है। तो जैसे जैसे हर एक कंट्रीज में ट्रेजेडी होने लगी तो इंसिडेंट्स होने लगे, वैसे उस कंट्री को रियलाइज होने लगा कि ड्रग्स पे रेगुलेशंस होने चाहिए। तो यूरोप में ये 1960s में पहले हुआ, तो यूरोप ने पहले स्टार्ट किया ये। For most countries, whether or not they had initiated product registration controls earlier, 1960s and 1970s saw a rapid increase in laws, regulations, and guidelines for reporting and evaluating the data on safety, quality, and efficacy of new medicinal products. So, जैसे यूरोप में ट्रेजेडी हुई, उसका मतलब उसको ध्यान में रखते हुए बाकी के कंट्रीज ने फिर खुद के लॉज रेगुलेशंस लाना चालू किए। कंट्रोल दी सेफ्टी, क्वालिटी एंड एफिकेसी ऑफ न्यू मेडिसिनल प्रोडक्ट्स। तो उसके बाद क्या हुआ कि द इंडस्ट्री एट द टाइम वाज बिकमिंग मोर इंटरनेशनल एंड सीकिंग न्यू ग्लोबल मार्केट्स। However, the divergence in technical requirements from country to country was such that industry found it necessary to duplicate many time-consuming and expensive test procedures in order to market new products internationally. अभी हर एक कंट्रीज अपने खुद के रेगुलेशंस लाने लगी, खुद के लॉज लाने लगी टू कंट्रोल द सेफ्टी, क्वालिटी एंड एफिकेसी ऑफ द प्रोडक्ट। तो उससे कंपनीज को क्या होने लगा, कंपनीज भी खुद का बिजनेस बढ़ाना चाह रही थी तभी उस टाइम पे। तो उनको डिफिकल्टी क्या आ रही थी कि उसने एक प्रोडक्ट एक कंट्री में रजिस्टर कर लिया, उसके लिए एक पर्टिकुलर स्टडी परफॉर्म की, अभी दूसरे कंट्री में उनको रजिस्टर करना है तो उनको दूसरी स्टडी परफॉर्म करने की जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि उनके लॉज, उनके रेगुलेशंस अलग है। तो उनको डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, उधर टाइम उनका कंज्यूम होने लगा, पैसा उनका जाने लगा। तो उससे क्या हो रहा था कि एक तो टाइम कंपनी का वेस्ट हो रहा था, पैसा वेस्ट हो रहा था, और अथॉरिटी भी खुद के जो सिटीजन है उनको जल्दी वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं करके दे पा रहे थे, क्योंकि एक तो कंपनी को ही वो डेटा जनरेट करने के लिए टाइम लगेगा, तो अथॉरिटी के पास तो डेटा आएगा नहीं, तो रिव्यू क्या करेगी और अप्रूव कैसे करेगी प्रोडक्ट। तो these are the drawbacks which are faced by the pharmaceutical companies in the early 1960s and 1970s. The urgent need to rationalize and harmonize regulation was impelled by concerns over rising cost of healthcare, escalation of the cost of the R&D, and the need to meet the public expectation that there should be a minimum of delay in making safe and efficacious new treatments available to patients in need. अभी इससे मतलब ये डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, ये टाइम कंजम्पशन रिड्यूस करने के लिए
there is a urgent need came into existence, क्योंकि इससे जो ड्रग का प्राइस है वो भी बढ़ रहा था, क्योंकि कंपनी ऑफ कोर्स वो डेटा जनरेट कर रही है, तो वो वसूल तो प्रोडक्ट के कॉस्ट से ही करेगी, तो उससे प्रोडक्ट का कॉस्ट भी बढ़ रहा था और पब्लिक को डिले भी हो रहा था. सो these are the, due to this all these concerns, there is a highest need coming from the market also, or all the authorities also. There should be a common requirement for the registration of the products. So due to these concerns, there is a need came into existence to harmonize the requirements required for the registration of the pharmaceuticals. So these are the problems faced by the companies as well as the authorities. The initiation of the ICH, harmonization of regulatory requirements was pioneered by the EC, matlab European Commission, Europe, in 1980s. As the European Commission Europe moved towards the development of a single market for pharmaceuticals, the success achieved in Europe demonstrated that harmonization was feasible. At the same time, there were discussions between Europe, Japan, and US on the possibilities of harmonization. So first, harmonization जो है वो यूरोप ने स्टार्ट किया 1980s में. After it showed a success in the Europe that harmonization is feasible, then US and Japan, they were in discussion with the Europe for the further possibilities for harmonization. So first harmonization was initiated in the Europe. The birth of ICH took place at a meeting in April 1990, hosted by EFPI. EFPI matlab, this is a European Federation of Pharmaceutical Industries Association. In Brussels, representatives of the regulatory agencies and industry associations of Europe, Japan, and US met primarily to plan an international conference, but the meeting also discussed the wider implications and terms of reference of ICH. So, first meeting was held in first meeting was held in Brussels. In this, the representatives from industry and representatives from regulatory also met, and they discussed on the points on which they have to harmonize the requirements, and they have also discussed the wider, means what are the other implications of this harmonization. First, ICH steering committee. This is one of the committee of the ICH which is having the decision-making authority. At the first ICH steering committee meeting, the terms of reference were agreed, and it was decided that the topics selected for harmonization would be divided into safety, quality, and efficacy, to reflect the three criteria which are the basis for approving and authorizing new medicinal products. So, at their meeting, they have decided these three topics. That is safety, quality, and efficacy. And on these three topics, they will harmonize the requirements. And these topics will be taken into consideration while approving and authorizing new medicinal products. Any query in this slide up to this? Next, it is benefits of ICH. Regulatory harmonization offers many direct benefits to both regulatory authorities and the pharmaceutical industry, with beneficial impact for the protection of public health.
So public health. sir. Yes. Amit sir. So please tell me about steering committee meeting. Sorry. Steering committee meeting. Okay, steering committee. This is a committee. This is a committee which is a combination of the industry representatives and the regulatory representatives of the US, Europe, and Japan. Okay. So these will have the decision-making power. They will take the opinions from all the other countries which are the observers or the attendants of this meeting, and they will discuss internally and they will finalize which are the points to be taken into consideration for harmonization of the requirements. So mainly the steering committee is the combination of all these members. Okay, thank you, sir. Okay, benefits of ICH. First benefit is the benefit to both the regulatory authorities and the pharmaceutical industry with beneficial impact for the protection of public health. मतलब public health will be protected. मतलब क्योंकि एक तो कॉमन रिक्वायरमेंट रहेगा जिससे क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी चेक होगी, तो पब्लिक का जो हेल्थ है तो एक ये जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग डेटा जनरेट होगा, तो द हेल्थ ऑफ द पब्लिक विल बी प्रोटेक्टेड. Then next is key benefits include preventing duplication of clinical trials in humans and minimizing the use of animal testing without compromising safety and effectiveness, streamlining the regulatory assessment process for new drug applications, and reducing the development times and resources for drug development. So this is another benefit of ICH, that it prevents the duplication of preclinical as well as clinical trials. Also, it streamlines the regulatory approval process, reduces the development times, and also resources for the drug development. मतलब कम से कम resources use करके drug का development हो सकता है अगर ICH अगर हम follow करते हैं तो. Are the members of ICH. Founding regulatory members are European Commission Europe, Food and Drug Administration United States, the Ministry of Health, Labor and Welfare, or Pharmaceuticals and Medical Devices Agency Japan. And founding industry members are European Federation of Pharmaceutical Industries and Association, that is EFPIA, and Japan Pharmaceutical Manufacturers Association, that is JPMA, and Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, that is PHRMA. So these are the founding regulatory and founding industry members of ICH. In the interview, we will be asked who are the founding members. Any doubt? So today we will end the session, today's session here. If you have any doubt, you can ask. Do you have any doubts, students? You can ask directly. Yes, hello. एक्चुअली मैंने पढ़ा था कि 4 टॉपिक रहते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी, also including टॉपिक्स,
Yes, it is included in the further slides. At the initial level, ICH has only finalized these 3 topics for the assessment of a product. After the initiation, after some time, they have also finalized the multidisciplinary topics. So we will cover that topic in the further slides. So today we have covered only the initiation, how the ICH has initiated. Sir, Yes. can we have these slides to refer anytime later on? Like, so where can we, or you're sending these slides to our email? These slides will be shared in our group. Okay, sir. Okay, fine. Thank you, sir. Hello. Being of same country, how are regulatory members and industry members different? Sorry? Being of same country, how are regulatory members and industry members different? Names of the persons can be different. No? These are the names of the regulatory bodies and these are the names of the industry bodies. हमारी कंपनी में सॉरी कंट्री में अगर आप इसका देखोगे तो ये बोला जाता है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन या CDSCO. अगर कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे तो उसका तो अलग ही नाम रहेगा ना. Any more questions? You can ask, otherwise Alisha, you can take over. Yes, sir. Any more questions, students? No, ma'am. No, ma'am. Hello. Yes. Sir. Am I audible, sir? Meera? Yes, sir. If I'm fresher and joining RA department in a company, so what type of work I'll be allowed Your to voice do? is very low. If I'm joining a company as a fresher in RA department, so what kind of job I am allotted to, sir? Type of? Job work Will be allotted initially. as a fresher. Okay. May I know your qualification? I'm from analysis, sir. Okay. No Analysis. work experience, sir. I have no work. Okay, no problem. So, what is your qualification? I am not getting. Pharmacy analysis. Okay, so related to chemistry, right? Yeah. Yes. Okay. Yes. So mainly in regulatory, if you are having a expertise in this analysis part, so you will be given the documents like validation or
stability data to review these data. Okay. So first you will be given a validation file to review that data. Then slowly you will be given the other data also to review. After some period you will be given the documents for compilation of the dossier. So first your reviewing ability and how you go through the documents, all this is checked. Then only after you will be given a dossier for compilation purpose. Okay. First, it is means you are the company or the person DRA team or your colleagues will make familiar you with all the documents which are required for the dossier compilation. Then only you will be allotted a dossier. Yes, Nutan. No, sir. No questions here. फार्मा प्रोफेशन में सर ऐसी कौन सी फील्ड है सर जो जिसमें मतलब फार्मा प्रोफेशन के बच्चों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाए एज कम्पेयर टू अदर? क्योंकि सर अगर हम डीआरए में जाएं सर, डीआरए में भी सर हमारे को लाइफ साइंस वाले जो है कम्पीट कर रहे हैं, और अगर आर&डी सेक्टर में जाएं उसमें भी सर कहीं ना कहीं कम्पीट कर रहे हैं. Talking about other life sciences graduates, right? जी yes sir. No, look, Kalim, competition is at in every department because number of students are passing from every college, and competition is there, and so you have to prove your suitability for that post. So there is no alternative. So you have to go through that competition only. So just be competent enough to break that interview so that you will be selected in your dream job, such that there will not be minimum means a waiting period for you. कंपटीशन तो हर एक फील्ड में है ही, उसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते. सर मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हमने बैचलर्स ऑफ फार्मेसी किया है और किसी ने बीएससी किया है, वो भी ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स के अंदर आ रहा है और हम भी ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स के अंदर जा रहे हैं सर. तो हमें मतलब उसमें क्या ज़्यादा प्रेफरेंस कहाँ मिलेगा सर हमें? मेरे कहने का मतलब ये है किसी भी फील्ड में सर, डीआरए के अलावा भी. प्रेफरेंस आपको आपके नॉलेज के बेसिस पे ही मिलेगा. देखिए कैसा है कि आप जितना इंटरव्यू को कन्विंस कर सकते हो उसके ऊपर ही में आपको कन्विंस मिला. आप सपोज आपने बी फार्मा किया है और हर एक लाइफ साइंस का ग्रेजुएट है, दोनों आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो. ओके सर. तो उस टाइम पे आपका फार्मा का जो बेसिक नॉलेज है वो आपको काम में आएगा, बराबर, जो आपने फार्माकोलॉजी स्टडी किया है. जी आप सर. ऐसे प्रूव कर सकते हो उसको. आपका और वेटेज प्रूव कैसे करना है ये मतलब आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है. ये तो मतलब दिस इज totally dependent on how we prove ourselves best so that we get selected. ओके सर. देखो टोटल जैसा अभी बेसिक एक्सपीरियंस तो हो गया, आपने बी फार्मा कर लिया या एम फार्मा कर लिया, लेकिन आपको अगर इंडस्ट्री में जो एक्चुअल में काम किया जाता है उसके अकॉर्डिंग अगर आप कुछ कोर्सेज करोगे या कुछ ट्रेनिंग्स के वो थ्रू करोगे तो वो आपका एडिशनल बेनिफिट होगा. जब भी वो डोमेन की जॉब का वैकेंसी होगा तो आपको एक प्रेफरेंस और ज्यादा मिलेगा उसमें. अगर कॉमन फ्रेशर या प्लेन फ्रेशर ही है और अगर कोर्स किया हुआ है फ्रेशर, उसको तो लेने के चांसेस फिर बढ़ जाते हैं. ऐसा है. ओके सर. क्या सर प्लेसमेंट आपके यहाँ पे 100% प्लेसमेंट है सर?
assisting you to get placed, that we are providing the job vacancies to you. You should have to apply that vacancies. You have to follow up with the HR. ओके And सर। मतलब हाँ, हमको किधर वैकेंसी है, कौन सी कंपनी में, ये बताएंगे। फर्दर यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस। ओके सर, क्योंकि सर जैसा मैंने जो है अभी कुछ दिन पहले एक वैकेंसी निकली हुई थी, तो मैंने वहाँ पे अप्लाई किया, तो उन्होंने बोला कि नहीं बैचलर्स नहीं चलेगा, वो कह रहा है कि मास्टर चलेगा। तो मैंने बोला उनको सर मैंने डिप्लोमा भी किया हुआ है एक रेगुलेटरी अफेयर में, मतलब ऐसे ही बोल दिया मैंने उनको। तो वो कह रहे नहीं मास्टर्स ही कंसिडर करेंगे हम। तो कुछ कंपनीज का ये भी रहता है, मतलब उनका इंटरनल एसओपीज रहेंगे, या बोले रेगुलेशंस भी बोलते हो कि कुछ कंपनी एमएनसीज रहेंगी, वो सिर्फ मास्टर्स के लिए ही अलाउ करती है। ओके सर। ऐसा भी है, तो डिपेंड्स हाउ द कंपनी स्ट्रक्चर इज देयर। ओके सर। Excuse me, sir. Yes. So, out of this, in this introduction part, so what type of questions are asked in the interviews from this introduction? Like, गुड क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन पार्ट में आज हमने अभी जो देखा, उसमें आपको बोलेंगे कि रेगुलेटरी अफेयर्स मतलब क्या है। बताओ मुझे रेगुलेटरी अफेयर्स के बारे में आपको क्या पता है। उसके बाद आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ रेगुलेटरी अफेयर्स पर्सन। उसके बाद हो गया कि जेनरिक ड्रग और इनोवेटर ड्रग मतलब क्या है, ये हो गया। उसके बाद आईसीएच मतलब क्या है, आईसीएच का फुल फॉर्म बता। आईसीएच के फाउंडिंग मेंबर्स कौन है। उसके बाद है रेगुलेटरी अथॉरिटीज के नाम बताओ, कुछ कोई भी 5 कंट्रीज के रेगुलेटरी अथॉरिटीज के नाम बताओ। सो these are the common questions आज के जो सेशन है हमारा, उसके ऊपर पूछे जा सकते हैं। हेलो, सॉरी टू डिस्टर्ब सर। क्या सर हम अगर कोई भी आवाज ब्रेक हो रही है। यही क्वेश्चन। हेलो, बोलिए। यस, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। महेश। हेलो। यस महेश। हाँ सर, जैसे कि हम दूसरे मतलब फॉरेन कंट्रीज में हम कम्युनिकेट करते हैं रेगुलेटरी के लिए, रेगुलेटरी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए हैं, तो उसके दौरान हमें कभी कुछ विजिट करनी पड़ती है या फिर ऐसा कुछ रहता है क्या? विजिट मतलब रेगुलेटरी पर्सन को असिस्ट तो नहीं करनी पड़ती विजिट। ओके ओके। वो जो हायर लेवल के तो ये रहते हैं, पर्सन्स रहते हैं, वही जाते हैं मोस्टली। जीएम एजीएम वगैरह, उसके ऊपर भी वीपी वगैरह वही जाते हैं। सर रेगुलेटरी अफेयर्स में सर, या जो पूरी कंपनी का हायर लेवल होता है सर? रेगुलेटरी में हायर लेवल की अगर जरूरत है तो वो जाते हैं। डिपेंड्स टाइप, सिचुएशन क्या है, अभी आप कौन से सिचुएशन के कंटेक्स्ट में बोल रहे हो। क्योंकि सर ज्यादातर तो सर जो रेगुलेटरी अफेयर्स होता है वो ही कम्युनिकेट करता है ना सर, मतलब अदर कंपनी करता है। देखो कैसा है कि अगर क्वालिटी के रिलेटेड कुछ इशू हुआ है तो क्वालिटी एक पर्सन जाता है, मतलब क्वालिटी जो रिप्रेजेंट करता है, वो कॉर्पोरेट क्वालिटी एश्योरेंस हम जिसे बोलते हैं, वो एक पर्सन जाता है मोस्टली। रेगुलेटरी पर्सन की अगर जरूरत है तो वो उसके साथ जाते हैं। ऐसा डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सिचुएशन देयर। मींस रेगुलेटरी अफेयर्स तो सर इंफॉर्मेशन पास करेगा सिर्फ, मतलब अभी देखो रेगुलेशंस तो सबको पता है उधर क्या है कैसा है, लेकिन अगर
कुछ क्वालिटी का मैटर हुआ है, क्वालिटी इशू हुआ है, क्वालिटी फेल हुआ है प्रोडक्ट का, उसकी वजह से कुछ साइड इफेक्ट हुआ है या ऐसे कुछ सिचुएशंस है, तो उधर एक क्वालिटी पर्सन मोस्टली जाता है, और जो सेफ्टी फार्माकोविजिलेंस से रिलेटेड जो पर्सन रहता है और रेगुलेटरी अफेयर्स पर्सन की अगर जरूरत पड़ती है तो वो भी दे आल्सो गो टू विजिट द अथॉरिटी, डिस्कस विद देम. And is there any other question? सर रेगुलेटरी अफेयर में सर क्यूए का एक्सपीरियंस काउंट करते हैं? मतलब मैं अभी प्लांट में काम कर रहा हूँ तर क्यूए में, तर रेगुलेटरी अफेयर में वो क्यूए का एक्सपीरियंस काउंट करेंगे? You are aware of the documents which are handled in the plant, and you are also well known about how to review them. So this experience is considered. You all to the Global Pharma Academy. Let me introduce why Global Pharma Academy and why you should choose us. So, we are ISO and MSME certified national level institute in pharmaceutical and healthcare science, established with the proclaimed objective of becoming a center of excellence to guide students for building their career in the pharma sector. We offer certification program in pharmacovigilance, advanced SAS, drug regulatory affair, clinical research, medical writing, retail pharmacy business management, and pharma marketing. Mr. Amit Kumar Mane is the founder of Global Pharma Academy. His education qualification is M Pharmacy MBA, and he has 13 plus experience in retail wholesale, even though in international export knowledge in pharma sector, and he's also the owner of Malan Medical and distributor, which is situated in Pune 2000 since from 2013. He's also the trainer of Global Pharma Academy with a workshop. He's delivering retail and wholesale pharmacy business management, and you can follow him by following his YouTube channel, that is Things by Amit. What is the vision of Global Pharma Academy is that with the goal of educating every aspirant who wants to work in the pharmaceutical sector, we offer education at most affordable price in India. This is our main mission, that everybody should come and join our academy with the because already we are providing you knowledge with a very affordable price. Our goal is to lead the pharmaceutical training market on a global scale, and India should grow into a country known for innovation and quality. We want you to be the first global platform where business executive may select the top personals in the pharmaceutical sector to satisfy the most recent industry demands. What benefit you will get? First of all, our students are trained and nourished under excellent faculties members having 15 plus year industries experience as well as academic excellence. Here we our faculties and other team of GPA nourish students rigorously to train to meet the industry requirement. Now, apart from domain knowledge, why us? Why you will choose us? We'll give you assignment and tasks that already I have told you. We'll prepare your resume, how to, what are the skill set you have to add on your resume, how your resume should be look like. We'll work on your communication skills, even though we'll work on your presentation skill. We'll give you mini projects that you have to deliver within your 3 month certification course. And at the end, we are also practice mock interviews so that you will build up your own confident level when you go for the interviews.
Then your personal development, like what is SWOT analysis, how you are before entering to the academy, and after joining 3 months of certification course, what you have gained. And we'll give you job assistance throughout your certification course. Even though after that, we are also giving you the lifetime assistance. Whenever there is a vacancy, our HR manager will deliver you, and if you are suitable for that, then you send your resume to those person or to that company. Even if we have tied with any of the company and you have a vacancy, then also we refer you there, and on the basis of your performance, then only you got selection. Okay. As I told you earlier that we conduct examination, we have a doubt clear session, and of course life assessment. So I will give you 3 minutes to read the syllabus. This is the syllabus that we are going to deliver you within this 3 months of certificate, which is divided into 12 classes. And these are all we will cover on Saturday session and Sunday session, and Saturday will be our skill development classes. Okay, like resume preparation, what are the technical questions we will prepare, we will discuss with Umakant sir, and what are the technical questions, what are the HR questions you have to cover. Even though we will share that on the group after the enrollment. And on Sunday, Umakant sir will deliver you these classes. This is the syllabus with PPT. And after the session, we will also give you assignment, and you have to submit within Thursday. I proceed to next slide. Yes. Yes, ma'am. Now, what is the enrollment procedure? Let me tell you, the fee structure we have right now is 8,999. And if any of the students who are facing any financial issue or any personal issue, they can, we are also allowing for the half payment. Installment procedure is there. You have to pay 50% of the course fee or 40% of the course fee, and you have to pay to this number. And after successful payment, you have to share the payment screenshot with description of your name, mail ID, your location, qualification, and WhatsApp number. After that, you will get a seat confirmation mail, and before one day, all student will be added in a class group on WhatsApp, where we all classes laying recording whatever the PPTs of the class and instruction we will deliver or you on that group. Got it? Anyone confirm? So after enrollment confirmation, there is some decorum we are maintaining in GPA, and that is mandatory for all the student as well as for the fresher, even though for the job holders. Those who are job holders, might be they are facing some issues to join the Saturday session, so we are considering only the attendance for the Sunday, because our motto is not to hamper your job responsibility as well. So we have a self declaration form. After the enrollment, you have to fill it and deposit to the HR department. So we'll discuss more when we'll give you this declaration form in group. This is the declaration form for the job holders. Duration on mode, you already know that duration is 3 month. Mode is online, and platform that is we are using is Joho. And the classes schedule will be on weekends, Saturday and Sunday. There is a mistake in timing. Timing will be your 1:15 to 3:15. Okay. These are the contacts number. You can directly contact to Amit sir as well.
Ria Sinha is the HR department of Global Pharma Academy, and Alicia, that is me. I am the student coordinator of Global Pharma Academy. So if you have further any queries, you can contact us directly. For more innovative things that you can follow things by Amit, which is the uh, channel of Amit sir in YouTube. And thank you for today. And this is all about Global Pharma Academy. I hope your all doubts are clear today. If, if you have any question, you can ask us directly. Fee structure. Structure is 8999. Right now it's 8999, but if you are not able to give 8999 at a time, there is an installment procedure. You have to give 50% of the fee, and rest you will give within 1 month.